Good morning, guys. Online students, Suraj, Sudeep, I hope I'm audible. All right. Thank you. Now, one topic from pre-history जो हमारा छूट गया था, that was the megalithic culture or the megalithic age. Right? Now, megalithic, when you hear this word, what comes to your mind? Literal meaning क्या है इसका? Made of two words, megas and lithos, Greek words. Mega means big and lithic means stone. Okay? Now, if we go by the convention that has been established in archaeology, Neolithic, Paleolithic, Chalcolithic, Mesolithic, so वहाँ पे these represent the stone technology used by the communities who were living during this period. However, this is not the case for the megalithic people. Megalithic culture in India can be dated from around 1200 BCE right up to the 1st century AD. Right? And during this period, people in India had also started using metals. The megalithic age of India was experienced throughout the subcontinent. So north में मिल जाएगा, east में मिल जाएगा, northeast में मिल जाता है, central India and also peninsular India, right? However, when we are talking about the Indian megalithics, we are primarily talking about which part of India? Southern portion of India, peninsular India, right? And in the peninsular India, during this period, कौन सा मेटल यूज करने लग गए थे लोग? Which metal was being used? Iron. So the megalithic age of India is also known as the Iron Age. ठीक है? Now, if people were using tools made out of iron, why the name megalith? Because these large stones are often found in association with the graves. Yes. Or burials. Now, these large stones were erected in a variety of patterns, in a variety of combinations. So, कई अलग-अलग type के megalithic burials होते हैं, right? Now, if a question is going to be asked, तो वो कहाँ से आएगा? What are the things that we generally focus upon while talking about the proto or prehistoric period? इसकी बात करते हैं हम. First of all, yes, sites or sources or the pattern of life. For example, economy including both the subsistence as well as secondary economic activities. और किसकी बात करते हैं? Society and settlement pattern. What else do we talk about? The political structure. Right? And finally, the legacy
और significance of a particular age in the process of historical development. ठीक है. Now the megalithic age टाइम पीरियड क्या बताया है हमने? Around 1200 BCE to 100 CE. But megalithic burials are most closely associated with a subset of this period. ठीक है. तो इमर्ज होना तो पूरे पीरियड में दिखता है, इमर्जेंस तो पूरे पीरियड में दिखता है, प्रेजेंस पूरे पीरियड में दिखता है, बट द फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 BC to 100 CE. Now, I want you to think about what was going on in the deep south during this period. क्या चल रहा था? Sangam age time period 3rd century BC to 3rd century CE. ठीक है. कोई ओवरलैप है with the megalithic age? Yes. So the later portions of the megalithic age coincided with the earlier portion of the Sangam age. So one source of megalithic life can be Sangam literature. ठीक है. The pattern of megalithic life is also reflected in the Sangam literature. Now, the Sangam literature is considered to be a descendant of the megalithic cultures. Megalithic communities were spread across the Tamil region. The megalithic communities were divided on the basis of a tribal lineage, right, with their own chiefdoms. इन सब सारे chiefdoms के बीच में competition था, right? One was trying to absorb the other. Gradually what happened? इन छोटे छोटे chiefdoms से बड़े chiefs emerge होते हैं, and this is what we find mention of in the Sangam literature. ठीक है. So Sangam literature, while it does not give us direct evidence of daily life in the megalithic period, but it gives us indirect evidence of life during the megalithic age. Clear? Now, the Sangam period also witnessed the establishment of trade linkages between the Tamil region and other parts of the subcontinent as well as other parts of the world, right? Now, one region which was in constant contact with the Tamil region during this period was the Roman Empire. Okay? So the Greco-Roman sources also become relevant. And what was the nature of the relationship between the Roman Empire and the Sangam polities? Political था या फिर economic था? Economic. किस तरह का information मिलेगा ज्यादातर? Economic information, right? Trade related.
details. ठीक है. Now, while both of these literary sources existed, they are not linked directly with the megalithic people. Megalithic people, megalithic age was simply coinciding with the Sangam age. So these megalithic communities must have been living adjacent to the Sangam age people. तो उनके बारे में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली बातें करते हैं. The Sangam literature bears a distinct consciousness of having evolved from these tribal communities. तो antecedents के बारे में भी थोड़े बहुत details देते हैं. However, the bulk of the details regarding megalithic cultures do not come from literary sources. Rather, they come from archaeological sources. Right? And among the archaeological sources, there is a huge imbalance. Generally, हमको किस तरह के डिटेल्स मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल, या किस तरह का एविडेंस मिलता है? We get grave sites as well as settlement sites. However, in the case of the megalithic period, हमको कहाँ पे imbalance दिखता है, किस तरह का imbalance दिखता है? Very few actual settlements have been found. Rather, the bulk of the information we have comes from megalithic burials. And what kind of information can we get from these burials? Different types of burials, burials of different sizes. Right? There is also variation in the amount, in the quantity and quality of grave goods, grave furniture. ठीक है? Further, these things also tell us about social and economic differentiation. They also indicate the presence of a political class, a ruling class. Okay? They also indicate a high level of material development and the ability of the occupants of these graves to mobilize labor and resources at a large scale to build these tombs or burial monuments. The location of these grave sites and the accumulation of grains, legumes, millets, as well as animal bones also give us an indication about their dietary pattern, their subsistence practices. The presence of utensils, weapons, etc. give us an indication of their technological development.
Further, the presence of non-local items in these graves is evidence of what? Trade links. The large variety of goods, different types of goods made using different materials also gives us an insight into the presence of different occupations in these cultures. Further, these sites also give a solid evidence of their religious life, their beliefs and practices. And as part of their religious life, we can also make certain inferences about their social ethos, right? किस तरह का ethos? What did they value? They valued their ancestors, so there was a strong lineage-based identity that was present, right? Maybe even ancestor worship was going on. Warfare must have been very common, and this was the result of the large effervescence of megalithic burial sites. क्योंकि बहुत सारा war हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, and they are being buried in a ceremonial manner. It also gives us indication of the presence of a warrior culture in the people, right? So warrior ethos must have been valued. This is also attested to by the erection of hero stones, virakkal, जो कि हमने संगम पीरियड में भी ऑब्जर्व किया है. And many of these practices continue even to this period, or till very recently in the past they used to continue. Okay? So societal values and ethos, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता लगता है इन बेरियल साइट्स से. नाउ व्हाइल megalithic burials are the primary archaeological source for studying the megalithic age, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का सेटलमेंट आपको मिला ही नहीं, राइट? सो some settlements have also been found both on the western coast as well as the eastern coast as well as the river valleys of southern India. What kind of information do we get from this? Settlement pattern becomes clear, right? Were the people living in villages or cities? Villages, तो rural background था. And this is starkly in contrast to what was happening during the Iron Age in northern India. Iron Age in northern India is associated with the second phase of urbanization, from the Mahajanpat period onwards. लेकिन यहाँ पे even after Iron Age, rural settlement pattern is continuing. However, there was also a tendency towards urbanization, right? In the few sites that have actually yielded settlement stratigraphy, क्या देखने के लिए मिलता है? That during the earlier period, these villages were quite small in size, but later they became larger and larger. So this indicates two things. First of all,
transformation towards urbanization, and secondly पॉपुलेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा या स्टेबल रहा होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड बाय द increasing size of settlements, right? Now if you remember the Neolithic age, so within that we had talked about regional variations of the Indian Neolithic age. What had we observed about the southern Neolithic? एक कोई यूनिक फीचर याद है? बाकी जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था? एग्रीकल्चर. बट इन द केस ऑफ द सदर्न नियोलिथिक, pastoralism, that is animal husbandry, was most important, right? Now the megalithic cultures had evolved out of the southern neolithic only. ठीक है, and therefore pastoralism continued to remain a part of their economic life. ठीक है. However, we also find that during the Neolithic age, the importance of agriculture started to increase, especially with the use of iron implements. Okay? So there was a distinct move from pastoralism towards agriculture. और इसको प्रूव करने के लिए एक तो यही है कि size of the settlements was increasing. The nature of settlement was also changing. ठीक है. Now most of these settlements were located where? Either on the coastal plains or in the river valleys. Why do you think people would have preferred to live on the coastal plains or river valleys? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, सच एज सॉइल एंड वाटर, मॉइस्चर. ठीक है. सो मोस्ट सेटलमेंट्स were located in the coastal plains and river valleys. That is why people prefer to live here rather than anywhere else. Secondly, burials कहाँ पे located होते थे? Were they also located close to the settlements? नहीं. These people were very smart, quite intelligent. They knew that if they dedicated large portions of fertile tracts to building burial monuments, तो वहाँ पे agriculture तो नहीं हो सकता है. So this would be an unnecessary waste. Therefore, most of the burial sites were located far away from the fertile regions, roughly 10 to 20 kilometers away from the main settlement. ठीक है. So burials were located away from settlements. ठीक है. एंड इनको किस तरह के लैंड पे बनाया जाएगा?
barren, arid and रॉकी ग्राउंड पर, ठीक है. सो लैंड विच वॉज जनरली नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन वॉज प्रेफर्ड फॉर मेगालिथिक बेरियल्स, ठीक है. दीज वर लोकेटेड रफली 10 to 20 kilometers away, right? एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और हमको देखने के लिए मिलती है. Do you think that these people constructed these burials 10 to 20 kilometers away from their main village and then forgot about them? नहीं, these were kept up, right? तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर लोग विजिट करते थे एंड रेगुलर बेसिस पर रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, सैक्रिफाइसेस वर हेल्ड, फीस्ट्स वर हेल्ड. एक ही लिनिएज के कई सारे जनरेशन सेम साइट्स में यूजुअली बेरी किए जाते थे. People would come with new stones as an offering to enlarge these burials because of maybe some raid or some natural event. अगर कुछ burials topple हो जाते थे, कुछ megaliths topple हो जाते तो उनको रिपेयर भी किया जाता था. They were repaired and renewed also. So how do you think that a regular contact was maintained between the settlement and these burial sites on a regular basis? Was it simply the result of their belief system या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक नेसेसिटी भी रहा होगा? कोई इकोनॉमिक नेसेसिटी भी रहा होगा. एंड frequent movement between the main settlement and these relatively isolated regions is evidence of what? रेगुलर बेसिस पर अगर बंदा एक से दूसरी जगह पे जा रहा है तो क्यों क्यों जाता होगा इस जमाने में? फॉर पैस्टोरलिज्म, राइट? विलेज ट्रांसह्यूमेंस, राइट? अच्छा, नाउ ऑल्दो burials were constructed far away, this indicates pastoralism, but it can also not be denied that there was a general movement towards agriculture. ठीक है, एक तो ये चीज है. सेकंड हमें क्या दिखता है? that some burials were also located in fertile tracts right in the middle of agricultural fields. What do you think is the significance of this? Why would a rational person who is concerned about increasing the productivity of agriculture cordon off a major portion of his field to dedicate this to building a burial site, monument? क्यों क्यों करता होगा? हाँ, maybe it was an important person, but और सोचो, link it with religious beliefs. हाँ, life after that तो ठीक है. This indicates that these people probably believed that their ancestors are always present with them and they have goodwill towards them. ठीक है, so ancestors इनको bless करेंगे and इनकी blessing की वजह से fertility और increase हो जाएगी, right? So this indicates two important things: ancestor worship. And why were they worshipping their ancestors? For higher fertility, right? So importance of agriculture was increasing during this period. दोनों चीजें इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हम इन्फर कर सकते हैं. Is this much clear? So this is the kind of information that is available to us, and these are the kinds of inferences that can be drawn from this information. ठीक है, take down हाँ
कम्युनिटी लेवल पे होता था, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता था, बिकॉज द मेगालिथिक सोसाइटी वाज बेसिकली अ ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. क्या होते हैं? These are lineage based societies. So all members of a particular tribe believe that they are descended from the same ancestor. They are descendants of the same ancestor. ठीक है. Secondly, ट्राइबल सोसाइटीज में इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, लेकिन बहुत हाई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज रादर फ्लैट इन नेचर. ठीक है. सो इट इज egalitarian, but within the egalitarian socio-economic and political structure एक institution ट्राइबल सोसाइटी को कोहेजन प्रोवाइड करता है. एंड व्हाट इज दैट? द ऑफिस ऑफ द चीफ, chiefdom. And what is the relationship of the chief with the members of his tribe? They look upon him as their leader. The chief has the ability to mobilize resources at a tribe, at a community level. ठीक है. और ये जो बेरियल मॉन्यूमेंट्स थे जनरली किसके होते थे? Chiefs were buried here. And the entire resources of the community would have been necessary to both construct as well as for the necessary upkeep and maintenance. ठीक है. So they were built and maintained or even enlarged by the entire community. ठीक है. However, as the society started to move away from its tribal roots, क्या इमर्ज होने लग गया? लिनिएज बेस्ड सोसाइटी से स्टेट सोसाइटी. राइट. नाउ even in these proto state societies, full fledged state society नहीं establish हुआ था, even in these proto state societies the institution of chiefdom remained intact. ठीक है. तो even during the later periods of the megalithic age, monumental tombs continued to be constructed. However, apart from lineage, एक और social institution की importance बढ़ रही. That was the joint family, right? So, family monuments or family burials are also going to emerge. They are not going to be as elaborate or large as these monumental tombs. क्योंकि monumental tomb में क्या associated होगा, क्या use किया जाएगा? Organized labor. यहाँ पर family labor at an individual level at a lower scale, right? So that is going to be visible. Apart from this, with the emergence of state society or transformation towards state society, what is going to be the main change in political relations? ये state society जब बढ़ रही है तो कैसे expand करेगी? Through warfare, right?
competition, so warfare is going to become much more prominent. And warfare जब होता है तो किसकी जरूरत होती है? वॉरियर्स की जरूरत होती है. तो वॉरियर्स का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. एंड देयरफॉर apart from these kinds of monumental tombs dedicated to chiefs or family burials, some memorial stones also began to be erected. ठीक है, अब ये पहले भी होते थे, but their occurrence is going to be much more during which period? Early period or later periods of megalithic? Later periods of megalithic. ठीक है, तो यहां पे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. राइट, नाउ राइट डाउन अ फ्यू लाइंस. ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे होती थी रोमन एम्पायर के साथ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल the trade with the Roman world was established from around the 1st century BC onwards. ठीक है, by this point of time संगम एज was in full swing. संगम सोसाइटी किस तरह का सोसाइटी था? अर्बन सोसाइटी था. तो trade between Rome and southern India was taking place through these संगम age settlements. Large full-fledged ये क्या बोलते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स होते थे. राइट, in the periphery of these settlements were agricultural tracts. Right, जो कौन ऑक्यूपाई करता था? These megalithic age people. Now Sangam age society was also, or Sangam age state was also the result of this long process of competition between small chiefs, small tribes. अब धीरे धीरे क्या हुआ? Through the process of competition, the weaker ones were absorbed within the stronger ones and big chiefs emerged. और अब इन big chiefs के बीच में competition हो रहा है. Right, even bigger chiefs emerged. They now started calling themselves kings. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो small chiefs हैं या small tribes हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं. They have simply been absorbed. And the process of creating a universal state in the Tamil zone is going to continue throughout the Sangam age. That is why we find 3 Sangam age kingdoms, right, who are always in competition against each other. ठीक है, तो and ये जो बड़े संगम polities हैं, they are going to become the link between the Roman civilization and the megalithic people. ठीक है, so they are going to be the interface between the megalithic people and the Roman civilization. Trade is going to be conducted through them. Okay, now write down a few lines. मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में. गिव इंट्रोडक्शन. द टर्म मेगालिथिक is derived from the Greek words mega meaning large and lith meaning stone. Stop. Next point. Within the scope of archaeology, megaliths refer to large stone monuments. Megaliths refer to large stone monuments. Full stop. सब पॉइंट लिखो. However, not all stone monuments qualify as megaliths. Not all stone monuments qualify as megaliths.
Next sub point. Rather, the term megalith is generally applied to burials made of large stones during the prehistoric age. Next main point. Although such burial sites were found right from the Upper Paleolithic age, in many parts of the subcontinent, comma, the phrase within inverted commas Indian megalithic age generally denotes the period between 1200 BC and 100 CE, and is used primarily in the context of peninsular India. Subpoint. While megalithic burials in South India appear throughout this period, comma, they are most common from 600 BCE onwards. From 600 BCE onwards. ठीक है? Next main point लिखो. Megalithic cultures in peninsular India. Next main point. Were found over a large area including कहाँ कौन से स्टेट से मिलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में? All the 4 southern states, मतलब 5 southern states now, और महाराष्ट्र also, ठीक है, including महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश and Telangana. Point. Some important sites include
बताओ कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स। जूना पानी कहां पर? महाराष्ट्र। जूना पानी। Adichanallur, where? Tamil Nadu. And Kodumannal कहां पर? वंस अगेन तमिलनाडु। ठीक है, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच साइट्स, लेकिन सबके नाम तो पॉसिबल नहीं है याद रखना, तो 2 और 3 ऑफ दीज यू कैन मेंशन इन एनी आंसर। ठीक, तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, आई एम नॉट मेंशनिंग देम नाउ, वेयर एवर इट इज रेलिवेंट आपके नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में आई विल मेंशन देम। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टेक डाउन वन मोर पॉइंट, मेन पॉइंट। द मेगालिथिक एज of South India is synonymous with the Iron Age. Synonymous with the Iron Age. ठीक है, it represents the first phase of life in South India when humans began using metallic tools. और मेटल के यूज करने से सबसे मेजर चेंज किस में आता है? सबसिस्टेंस पैटर्न में, इंटेंसिटी ऑफ सबसिस्टेंस में, पॉपुलेशन साइज में, एंड दीज आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर फर्दर हिस्टोरिकल चेंज. During the megalithic period, people were still living in the prehistoric age, but during the Sangam period, they had stepped into the historic age. Or megalithic age was the penultimate stage for the emergence of a historical phase in South. ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट मेन पॉइंट, द यूज ऑफ मेटल transformed life in a major way and marks the penultimate stage before the emergence of the historical phase. ठीक है, is this much clear? Now, on the basis of their types, several classes of megaliths have been identified. So classification of megaliths therefore also becomes possible. इसमें कई तरह के मेगालिथ्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग रॉक कट केव्स,
menhirs, dolominic cysts, hood stones and capstones, and some simpler burial types such as pit burial, and urn burial. Apart from this, stone circles, cairns, and barrows are also found. रॉक कट केव्स क्या है ये? यूजुअली केव्स कहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं? हिली रीजन्स में देखने के लिए मिलते हैं, वेयर देयर इज इनफ स्टोन मटेरियल, और क्लिफ फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलता है. बट दीज केव्स आर फाउंड ऑन फ्लैट ग्राउंड, राइट? रॉकी सरफेस पे ही मिलेगा, लेकिन फ्लैट ग्राउंड पे होता है. दीज आर सबटेरेनियन कंस्ट्रक्शंस, यानी कि digging is from top to bottom. तो किया क्या जाएगा? Suppose this is the flat rock surface, a square chamber is going to be dug, right? तो ऊपर से देखने में square दिखेगा, and 2, 3 or even 4 graves are going to be excavated within this. The dead bodies are going to be placed within along with various other grave goods. Okay, so these are the rock cut caves. So write down rock cut caves. These are scooped out of soft sedimentary rock. These are scooped out of soft sedimentary rock. And are generally found in groups of 2 or 3. Second लिखो, menhirs. Menhir is any stone which has been erected upright. ठीक है, तो एक stone pillar की तरह होता है. Okay, so write down, it is a stone pillar that is vertically erected on top of a grave site. On top of a grave site. So stop. Sub point. It may be bare. It may be bare or sculpted. It may be bare or sculpted. ठीक है. Next sub point. It may occur in isolation or in the form of several pillars arranged into rows.
तो अगर सिंगल लाइन है, सिंगल रो है, तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट फॉर्म ऑफ मेनहिर, एंड अगर मल्टीपल रोज हैं तो उसको एवेन्यू मेनहिर्स बोलते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट लिख रहा हूं। एवेन्यू, alignment is single row, avenue is multiple rows, two or more. डोलमेन्स या सिस्ट, डोलमेनिक सिस्ट्स, ये क्या होते हैं? नाउ natural patterns usually, or maybe some animal figures, some tree leaves etc, ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, purpose, the purpose is not entirely clear. It may be associated with the fertility cult, or with the cult of animal worship, or with the cult of ancestor worship or hero worship. कई सारे reasons हो सकते हैं। ठीक है, तो डोलमेनिक सिस्ट्स क्या होते हैं? A cyst is a square or rectangular depression that has been scooped out of the earth. उसमें straight slabs of rock are arranged on all sides. चारों sides पर straight slabs of rocks are arranged, and the floor is also prepared by laying down straight slabs of rocks. These straight slabs of rocks are called ऑर्थोस्लैट्स, एक वर्ड है। ठीक है, नाउ फॉर ईच सरफेस कई सारी पॉसिबिलिटीज है, मे बी अ सिंगल स्लैब इज यूज्ड और मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ स्लैब्स आर यूज्ड। ठीक है, राइट डाउन। डोलमेनिक सिस्ट्स, डोलमेनिक सिस्ट्स refer to rectangular or square graves lined internally with straight heavy stone slabs used, known as orthoslats, known as orthoslats. फुल स्टॉप। अच्छा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा या इसको कवर किया जाएगा? कवर किया जाएगा। राइट डाउन। जनरली these were covered with a slab on the top, with a slab on the top and the entire structure was memorialized, उसके ऊपर भी कुछ कुछ रखा जाएगा, was memorialized either through a cairn or stone circle or hood stones and or capstones. ये क्या होते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, cairn, stone circles, hood stones और capstones. Now a cairn, अगला हेडिंग लिख दो,
केर्न, जैसे हमने देखा ना अभी डोलमेनिक सिस्ट्स, अब अगला वाला लिख दो केर्न। केर्न क्या होता है? इट इज सिंपली a number of stones kept one on top of the other to make a sort of tower. ठीक है, write down. Cairn refers to a number of smaller stones placed one on top of the other in a tower-like formation. Full stop. Sub point. Generally, these are surrounded by stone circles. Stone circles क्या है? नाम से ही क्लियर है क्या? Stones are arranged around the grave site in a circular manner. Right? तो ये ग्रेव साइट हो गया, इसके ऊपर मान लो केर्न है, तो stones are going to be arranged around this in a circular manner. कई सारे सर्कल्स हो सकते हैं, right? Several concentric circles are possible. So write down stone circle. Next वाला लिखो stone circle. A group of small and large stones are arranged around the burial site in one or several concentric circles. Next, we have to say hood stones and capstones, right? So give the next subheading, hood stones and capstones. हुड स्टोन्स को संगम लिटरेचर में बोला गया है कोडाइकल, and capstones have been called टोपिकल. ठीक है, तो टोपी होता है ना कैप, तो टोपिकल एंड कुडिकल. हुड स्टोन्स को कुडिकल, राइट? तो दिस इज द डोलमेनिक सिस्ट. इतना क्लियर है? व्हाट हैव वी सीन दैट around these dolmenic cysts or on top of these dolmenic cysts, further memorialization may be done by erecting hood stones or capstones. तो hood stone क्या होंगे? इस तरह से अरेंज किए जाएंगे, right? They are partly buried into the ground and they almost cover the main burial site, right? So write down hood stones referred to as kudikal in Sangam literature are heavy
slabs of stone arranged around the burial site slanting towards the grave. Slanting towards the grave. Stop. They are partly buried. They are partly buried in the ground. They are partly buried in the ground. ठीक है, समझ में आया? कैन यू विजुअलाइज? और टॉपिकल, next sub point, write down. Capstones referred to as topical capstones referred to as topical are placed above the burial site on top of other stones for support. So it looks almost like a mushroom. कभी फोटो खोल के देखना, मशरूम की तरह दिखता है. So the stone that is chosen, that is convex in shape from the top and flat from the bottom. ऊपर वाला जो surface होगा that is convex, नीचे वाला surface that is flat. ठीक है? अच्छा. Now very rarely does nature produce perfect shapes. कहीं ना कहीं irregularity होती है, बट यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? These are generally quite perfect in their dimensions. जो circular surface है that is actually circular, and जो flat surface है that is actually flat with very minute variations. What does this mean? That these were chiseled, deliberately worked upon. ठीक है? तो write down. और ये जो फ्लैट्स दिख रहे हैं ना हमको, these are also quite smooth, काफी स्मूथ सरफेस है. राइट डाउन. हाँ, उसी में the capstone has a convex shape with a remarkably flat bottom. Shape, convex shape. कॉन्केव तो अंदर घुसा हुआ होता है ना, कॉन्वेक्स बाहर निकला होता है. अरे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस नहीं आता? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, कॉन्केव लेंस तो होता है, राइट? अरे तो एक साइड से कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव है, एक साइड सॉरी कॉन्वेक्स है, दूसरी साइड से फ्लैट है. व्हाट हैव यू रिटन? The capstone has a convex shape with a remarkably flat bottom. This indicates careful carving and stone working to prepare the surface. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. क्या बचता है हमारा? पिट बेरियल्स एंड अर्न बेरियल्स. एक ही मिलेंगे, पिट बेरियल्स एंड अर्न बेरियल्स. पिट बेरियल्स एंड अर्न बेरियल्स. पिट बेरियल
भी इसी तरह का बेरियल होगा. इट इज डग इनटू द ग्राउंड, इट इज गोइंग टू ईदर बी रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग, यानी कि या तो ये शेप होगा ऊपर से देखने पर, या फिर इस तरह का शेप होगा. एंड द डेड मे बी प्लेस्ड विद इन दीज ईदर डायरेक्टली और इन अ कैस्केट और इन अर्न्स. ठीक है, यानी कि बड़े पॉट्स में रखा जा सकता है. राइट डाउन. रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग पिट्स were used for both primary as well as secondary burials. Both primary as well as secondary burials. What is a primary burial? क्या होता है primary burial? Where the dead body is placed into the grave immediately after the death. ठीक है, shortly after the death. Right. And secondary burial क्या होता है? Where some other funerary rites are performed before the bones or the remains of the dead are finally placed in the grave. Okay, so maybe they are left to the elements and finally bones are collected, placed in a small or large urn, and then put into the grave. Or maybe funeral pyre is cremation is done, ashes are collected, they are placed into an urn and placed over there. Okay, for both primary as well as secondary burial. Right? सब पॉइंट लिखो. A large variety of pit burials could be observed, including direct burial, use of a terracotta sarcophagus, and urn burials. And urn burials. ये दोनों यूज होते थे in the case of primary burials, and urn burial was used in the case of secondary burial. डायरेक्ट बेरियल तो पता होगा क्या होता है. क्या? The dead body is placed directly into the ground without any casket, without any coffin. Sarcophagus क्या होता है? It is another name for a coffin. किसका बनाया जाता था? टेराकोटा का. जनरली oblong shape का होता था. It was decorated from the outside, that means it was sculpted from the outside, and it had 4 legs also. ठीक है, तो ऐसे म्यूजियम में देखोगे कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लगता है कि दिस वाज अ बाथटब और समथिंग, लेकिन इसके ऊपर एक स्टोन या फिर टेराकोटा स्लैब भी रखा जाता था फाइनली. ठीक है, तो राइट डाउन. द टेराकोटा सार्कोफेगस, सब पॉइंट इसे, द टेराकोटा सार्कोफेगस was generally oblong,
having four legs, with a sculpted exterior and a stone or exterior and a stone or terracotta lid. Stone or terracotta lid. तो ये हो गया पिट एंड अर्न बेरियल. क्या बचता है? बैरो. राइट डाउन बैरो. क्या होता था बैरो? सिंपली mounds of earth, heaps of earth were accumulated over the actual grave site. और ग्रेव अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. पिट बेरियल भी हो सकता है और डॉल्मेन या सिस्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो राइट डाउन. बैरोज refer to earthen mounds to mark the site of an underground grave. They may or may not have stone circles around them. ठीक है. So these are the types of different megalithic burials. अब क्या जानना है हमें कि इनके साथ और डेड बॉडीज के अलावा और क्या क्या बेरी किया जाता था. ठीक है, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग. Not all of the graves, megalithic graves, actually have skeletal remains, right? तो कई सारी graves जो हैं वो empty भी. What does that indicate? Symbolic burials भी होते थे. ठीक है, तो maybe especially in case of warfare, if a soldier dies and his body cannot be recovered, so he was given a symbolic burial in some cases also. तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक मेन पॉइंट. An interesting discovery is that not all megalithic graves carry skeletal remains. This indicates that the empty graves may represent a symbolic burial. Stop. और ये जो आर्गुमेंट है, this is further strengthened by another practice of the megalithic people, that is the erection of hero stones or memorial stones. तो वहां पे कोई graves नहीं होगा, लेकिन एक menhir लगा दिया जाएगा. So this was probably also to memorialize some great warrior or chief. So write down. This is sub point. This is also attested to by the popular practice of erecting memorials known as hero stones or
वीरक्कल और वीरक्कल यहाँ पे लिखा ऑफ द संगम लिटरेचर। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मेगालिथिक बेरियल्स। नाउ द ग्रेव गुड्स। So what kind of grave goods can you expect to find in these burials, in these graves? ठीक है, food items such as grains or animal remains or pottery of a different of various varieties or weapons, right? Or tools or ornaments. What else? Fabric, clothing, ये सब मिलता है. What else? Some other items of daily use such as utensils और pottery में utensils भी आ जाएगा. और इसके अलावा बैठने के लिए कोई दरी वगैरह, मैट वगैरह अगर यूज करते हैं वो मिल जाता है. और अरे चलने के लिए फुटवेयर यूज करते हो, सैंडल्स एटसेट्रा दे में आल्सो बी फाउंड, राइट? तो ये अलग अलग चीजें हैं. तो राइट डाउन अ फ्यू लाइंस बिफोर वी मेंशन ऑल दीस थिंग्स. Megalithic burials yield a large variety of objects. Yield a large variety of objects that are very important for studying the megalithic culture. For studying the megalithic culture. अर्लीस्ट बेरियल्स हमको कब से देखने के लिए मिलते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैन? फ्रॉम द Paleolithic age itself, right? But was there any difference between these earlier burials and the megalithic burials? Yeah. The size and scope, the elaborate nature and the quantity and quality of grave goods was much higher in the case of megalithic burials. What does this indicate? एक तो मटेरियल, लेवल ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी वाज मच हायर, राइट? और दूसरा that some of the people were considered important enough that extensive use of labor, extensive time and materials were dedicated only for the construction of their memorials, their tombs. ठीक है, तो this also represents a higher level of socio-economic and political differentiation. The organizing capacity of the community was also much higher. ठीक है, so write down. While humans had been regularly burying their dead ever since the Paleolithic age, burying their dead ever since the Paleolithic age, comma, the megalithic burials were in a different league altogether. Were in a different league altogether. Full stop. Sub point. The
large and ornate megalithic burials with a vast array, the vast array, ARRAY, vast array of grave goods indicate, ABC करके लिखना, A, the high level of material development, B, the high level of planning and resource mobilization, high level of planning and resource mobilization, C, the rising capacity for political organization, D, the rising importance of the ancestor cult, which may be linked to the lineage based tribal society, E, belief in the concept of life after death, ठीक है, क्या क्या है, ABCDE, क्या था, A, material development, तो ये तो clear है that it was possible for the megalithic people to make such large burial sites because they were economically more developed as compared to the previous cultures. दूसरा क्या है, planning and resource mobilization, so this should also be clear कि इतने बड़े monumental burials बनाने के लिए great deal of planning as well as resource utilization of both material resources as well as manpower was necessary. Now, could this have been possible without some kind of political organization? नहीं, that is why C, क्या है C? The higher level of political capacity for political organization. D क्या है? ancestor worship का importance, ancestor cult का importance increase हो रहा था. And how can we link this to the lineage based tribal society? क्योंकि lineage based tribal society में all members of the community are considered to be descendants of the same common ancestor. चाहे वो actually reality में है या नहीं है, लेकिन सब लोग मानते हैं कि हमारा एक ही common ancestor है. That is why the importance of ancestors was also high, and this is reflected in the large monumental burials made by the megalithic. And what is E? Belief in life after death, क्योंकि यहाँ पे ना केवल dead bodies को ritualistic pattern में bury किया जा रहा था, they were also accompanied with several grave goods. Many of these things were items of daily use to be used by the occupant of the grave in the afterlife. ठीक है, next main point लिखो. The megalithic graves in South India have yielded
a large variety of grave goods including A, B, C, D करके once again. A, various kinds of pottery. Various kinds of pottery. Now, इनका जो वैरायटी है दैट वाज बोथ इन टाइप एज वेल एज यूजेज. कुछ आइटम्स तो यूटिलिटेरियन थे, दैट मींस डेली लाइफ में यूज होते थे, एंड व्हाइल अदर्स वर ऑर्नामेंटल इन नेचर. द टाइप्स वर आल्सो डिफरेंट. तो कुछ पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी था, कुछ पॉटरी वेरिएगेटेड क्ले का ब्लैक बर्निश्ड वेयर था, कुछ पॉटरी रेड वेयर था, कुछ पॉटरी लश्रस था, कुछ पॉटरी पेंटेड था, कुछ पॉटरी अनपेंटेड था, कुछ पॉटरी कॉर्डेड था, कुछ पॉटरी अनकॉर्डेड था. तो टाइप्स में और यूजेज में दोनों में वैरायटी था. ठीक है. नेक्स्ट बी, वेपन्स एंड टूल्स ऑफ अ लार्ज वैरायटी. किसके बने हुए? both metal as well as stone, of both stone and metal. Which of these do you think were more common? Stone weapons or metal weapons or implements? Stone वाले ज्यादा कॉमन थे, मेटल वाले कम कॉमन थे. एंड अमंग द मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स? आयरन एंड कॉपर वर यूज प्राइमरी. ठीक है. तो लिखो, stone implements and weapons were more common. But iron and copper implements were also found. Couple of questions. As there were calcolithic sites in peninsular India, how can iron tool be the first metallic tool in the south? Now, while copper was definitely used in the calcolithic period in South India, but उसका usage बहुत widespread नहीं था, right? Further, the calcolithic age of South India as well as the rest of India was rather sporadic in nature. ठीक है? During the megalithic age, metal was used regularly and this was a universal feature. ठीक है? And because of the spread of or the growth of population and the spread of a common cultural lineage across the deep south, हम iron age को first metallic age consider करते हैं in the context of the deep south. Second is Virakkal the same as Natukkal? Yes, Virakkal Natukkal दोनों same है. Memorialized memorial stones or the hero stones. क्लियर है? राइट. हाँ, तो ए बी हो गया था. व्हाट वाज ए? पॉटरी. दूसरा बी क्या था? वेपन्स एंड टूल्स. राइट, वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स. सी लिखो, ऑर्नामेंट्स. सच एज, तो इयरिंग्स ब्रेसलेट्स तो बहुत कम मिले हैं. सबसे ज्यादा क्या मिला है? नेकलेस मिले हैं. राइट. किसके बने हुए? वेरियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बीड्स के बने हुए. ठीक है, लिखो, ऑर्नामेंट्स इंक्लूडिंग a large number of beads and necklaces made of semi-precious stones
along with stone necklaces के अलावा कुछ और भी, along with gold, silver and copper. गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के भी ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं। सबसे मेटालिक ऑर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन किसके मिले हैं? कॉपर के, और सबसे रेयर गोल्ड के नहीं, सिल्वर के, बिकॉज लोकली गोल्ड तो अवेलेबल था, सिल्वर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो राइट डाउन ऑफ द मेटालिक ऑर्नामेंट्स, copper was the most common, while silver was the rarest. Next up point, bracelets, rings and diadems have also been found, but were much more rare. Diadems were also found, but were much more rare. ठीक है, तो कॉपर इंपोर्ट करते थे, कॉपर वाज नॉट लोकली अवेलेबल, नॉर्थ इंडिया से, राजस्थान वाले रीजन से इंपोर्ट करते थे, खेती माइन से या फिर। ठीक है, हाँ, कोलार गोल्ड ट्री से। हाँ, ऑब्वियसली हर जगह पे लोकली अवेलेबल नहीं होगा, तो सम डिग्री ऑफ ट्रेड मस्ट हैव बीन गोइंग ऑन, एंड दिस ट्रेड हैड बीन गोइंग ऑन सिंस द न्यूलिथिक कैलकोलिथिक एज। ठीक है, तब से चला जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ ऑर्नामेंट्स के अलावा, फूड मटेरियल्स, राइट, सो राइट डाउन फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या सी हुआ है? डी, डी, फूड मटेरियल्स इंक्लूडिंग a large variety of grains and pulses have been found. सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिला है? विच ग्रेन और सीरियल? राइस। ठीक है, राइट डाउन राइस और राइस हस्क was the most common, full stop। नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो, एनिमल रिमेन्स of both wild and domesticated animals were also found either partially or fully, Which animals were most commonly found? Domesticated animals में से कौन सा वाला सबसे commonly found? शीप और गोट नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, शीप और गोट कम मिलता है, रादर बफलो एंड पिग्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ द सदर्न न्यूलिथिक, कि बाकी जगह पर न्यूलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री होता था, तो सबसे पहले किसको डोमेस्टिकेट करते थे? शीप और गोट को, और साउथ में कैटल को। कैटल रियरिंग वाज ऑलवेज प्रेवलेंट इन द डीप साउथ, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट
some level of poultry farming was also in practice. Pig remains मिले, अच्छा, या तो पूरे जानवर मिले हैं या फिर उनके partial remains मिले हैं. What does this indicate? अगर पूरे animals मिले हैं तो maybe these animals were being sacrificed for the purpose of burial to be used by the occupant in the afterlife. और अगर partial remains मिले हैं तो bury करने से पहले उसको काट के वहां पे खाया गया है. That means funeral feast का part रहा होगा वो animal. And the person who was occupying that grave was also symbolically made an offering. उसको भी offer किया गया a portion of the animal. ठीक है, so it was as if the person who is actually dead is also was also part of that feast. ठीक है, so write down sub point. Sheep and goat were rarely found while buffaloes and pigs were the most common. Stop. Next sub point. Therefore, cattle rearing and poultry farming appear to be important occupations. ठीक है, next sub point. The discovery of partial animal remains may indicate the practice of funeral feasts. Right? So these are the different kinds of grave goods that are found from the megalithic burials. Clear hai? Now, on the basis of the literary and scientific, archaeological evidence, you can make certain inferences about life during the megalithic age. So first of all, write a few lines about the sources that are available. Give this subheading, sources. लिखो. The southern megalithic corresponds with the prehistoric phase of life. With the prehistoric / protohistoric phase of life. Pre or protohistoric phase of life. Protohistoric in the sense कि agriculture वगैरह शुरू हो गया था, metal tools use होने शुरू हो गए थे, but written records were not available. ठीक? Sub point. As such, historians rely primarily on archaeological remains to study this age. Next main point. However, the later stages of
The southern megalithic overlapped with the early portion of the Sangam age. With the early portions of the Sangam age. Full stop. Subpoint. As such, Sangam literature also provides insights into life of the megalithic people, into the lives of the megalithic people, and their relationship with the Sangam polities. With the Sangam polities. Next main point. Further, from the 1st century BCE the Sangam societies, the Sangam society also established trade links with the Roman Empire. As such, Greek and Roman sources of this period also provide valuable insights into the economic life of the megalithic age. Valuable insights into the economic life of the megalithic age. Next main point. While these sources do enrich our understanding of the megalithic age, they do not deal specifically with the megalithic communities. Who were adjacent to the societies that created this literature. Next subpoint. Therefore, the bulk of information regarding the megalithic age comes from archaeology.
comes from archaeology. Full stop. अगला पॉइंट लिखो. While very few settlements or very few megalithic settlements have been discovered, comma, a large number of megalithic burials have been found. Full stop. The point. These burials give direct and indirect information about A, B, C, D करके लिखो. A, subsistence pattern. B, secondary economic activities. C, political organization. D, socio-economic and political differentiation. E, religious beliefs and practices. F, societal values and ethos. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. Archaeology reveals that the megalithic age represented a transformative period. From nomadic pastoralism towards settled agriculture. This is indicated by A, B, C करते हैं. A, the relatively larger rural settlements during this period. B, the discovery of agricultural planning including
irrigation tanks, embankments, plowed fields, crop rotation, and mixed farming. See, the location of megalithic villages in plentiful river valleys and coastal plains with fertile soil and easy availability of water. C. D. The placement of megalithic burial sites far away from these settlements in rocky, arid, or hilly areas. Full stop. इसमें डी में एक सब पॉइंट लिख. The faraway location of the burial sites indicates the prevalence of village transhumans, but the discovery of a large variety of food grains and a large quantity of burials indicate the rising importance of agriculture which was necessary to sustain a large population. ठीक है. नेक्स्ट सब पॉइंट इसी में ही लिखना, बेरियल्स वाले में ही. डी पॉइंट है ना ये, हाँ उसमें ही नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो. On the other hand, some burials were located in the middle of fertile tracts.
इसके अंदर सब पॉइंट, दिस हैज बीन इंटरप्रेटेड as an indicator of the prevalence of ancestor worship, this has been interpreted as an, क्या लिखा है, as an indicator of the prevalence of ancestor worship and the fertility cult, which have been associated with the rising importance of agriculture. ठीक है, so these are a few details about the sources. Next, different aspects of life during the megalithic age. First of all, economic life. यहाँ पे क्या देखना है हमको? Primarily subsistence pattern, और craft production, और trade and commerce. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, उसके पहले भी कर सकते हैं. व्हाई ओनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या रिलेशनशिप है? अब आप बोल रहे हो कि कैपिटलिज्म से अगर एसोसिएट करना है तो यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स प्री कैपिटलिस्ट पीरियड में भी अकर करता था. हमने देखा है that even during the feudal period some degree of trade and commerce was always going on. So trade and commerce simply refers to the exchange of material goods and services. ठीक है, अब वो किस लेवल पे हो रहा है, कितने एरिया में हो रहा है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर द गुड्स ऑफ एक्सचेंज, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हु आर द ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड, दैट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, एंशिएंट पीरियड में क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन जो हो गया मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑल्सो से क्राफ्ट्स एंड ट्रेड प्रोडक्शन, सॉरी क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो जनरली हम वो फ्रेज यूज करते हैं. लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स जो कि ट्रेड किए जा सकते हैं. क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या जाता है? मटेरियल, स्किल, लेबर और एफर्ट, and time, because of which some value is created. Now, why is an individual or a group going to invest so much of their resource in creating something of this value? उसको ट्रेड करने के लिए, to get something in return. और वो रिटर्न कब पॉसिबल है? ओनली विद दिस ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, तो गिव दी, हाँ बताइए, यू सेइंग समथिंग. अच्छा, गिव दी सब हेडिंग इकोनॉमिक लाइफ एंड विद इन दैट राइट सबसिस्टेंस पैटर्न. क्या बता सकते हैं हम सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में? अभी तक तो काफी आइडिया लग गया होगा, बताओ.
What is the meaning of subsistence pattern? How did these people used to obtain their food? तो कोई एक सोर्स था, मल्टीपल सोर्सेस थे, सच एज एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, सब कुछ करते थे। ठीक है, तो राइट डाउन द मेगालिथिक people were initially considered to be nomadic pastoralists. However, evidence suggests that right from the beginning of the Iron Age, communities in the far south practiced a combination of agriculture, animal husbandry, hunting, gathering, and fishing, with a prominent bias towards which of these activities? Towards agriculture. With a prominent bias towards agriculture. ठीक है, तो सबसे पहले सबसिस्टेंस में हमको क्या देखना है? एग्रीकल्चर किस तरह का होता था। तो गिव दी सब हेडिंग विद इन सबसिस्टेंस पैटर्न, एग्रीकल्चर। अगर हमें एग्रीकल्चर डिस्कस करना है तो किन पैरामीटर्स में डिस्कस कर सकते हैं? एक तो एग्रीकल्चर समझने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या क्या हैं, राइट। दूसरा, क्रॉप वैरायटी क्या क्या थी। तीसरा, एग्रीकल्चरल टेक्निक सोफिस्टिकेशन किस लेवल का था, या सबसिस्टेंस लेवल एग्रीकल्चर हो रहा था या फिर हायर लेवल ऑफ कल्टीवेशन हो रहा था। वाज एग्रीकल्चरल प्लानिंग बीइंग डन, व्हाट वाज द साइज ऑफ द सरप्लस, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा था सोसाइटी पर, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। लिखो, एग्रीकल्चर में द मेगालिथिक economy was based on agriculture. So in other words, it was primarily agricultural in nature. ठीक है, was based on agriculture. सब पॉइंट लिखो। That is, agriculture was not only the chief occupation but the agricultural surplus was also the basis for other economic activities. ठीक है, नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो। The megalithic graves have yielded a large variety of charred and uncooked, large variety of charred, charred, charred and uncooked
grains and pulses. Grains and pulses. ठीक है. Along with several agricultural implements such as बताओ, plows, hoes, HOE, hoes, sickles, axes, etc. Okay. नेक्स्ट मेन पॉइंट. तो ये तो हो गए सोर्सेज एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए. एक सब पॉइंट और लिखो. अपार्ट फ्रॉम दिस some settlements and fields also indicate the practice of agriculture on a large scale. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. क्रॉप वैरायटी के बारे में बात करें. राइट. तो the megalithic people cultivated several crops such as ragi, pea, मटर, horse gram, green gram, black gram, paddy, and a large variety of vegetables and fruits. एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों प्रैक्टिस करते थे. What was their staple food? Rice, paddy. So write down sub point. However, paddy served as their staple food. ठीक है. अब in the context of North India, we had seen the benefit of paddy cultivation. क्या फायदा होता है? प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है and it contributes to a higher population. So it can sustain a much larger population from the same area as compared to wheat. इस पीरियड में as a result of the rise of paddy cultivation, what are we going to find? Rise of population. Write down सब पॉइंट इसी में. Large scale paddy cultivation with the help of artificial irrigation definitely played a major role with the help of artificial irrigation definitely played a major role in significantly increasing the population in South India.
ठीक है, इज दिस क्लियर? अभी साउथ इंडिया में व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच राइस इज कंज्यूम्ड? प्रेजेंटली साउथ इंडिया में कैसे कंज्यूम किया जाता है, किस फॉर्म में? फ्लावर भी बनाया जाता है, तो डोसा वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, और इडली भी बनाया जाता है उसका, तो ग्राइंड भी किया जाता है, और अनप्रोसेस फॉर्म में भी कंज्यूम किया जाता है, राइट? तो नॉर्मल जो भात होता है वो भी बनता है, वहां पे कंज्यूम किया जाता है। बैक देन ऑल्सो सेम यूज टू हैपन। अब अनप्रोसेस्ड फॉर्म में तो नॉर्मल राइस खाना है वो तो आप ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन अगर पाउडर चाहिए, पाउडर फॉर्म में, फ्लावर फॉर्म में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ग्राइंड करना पड़ेगा। और ग्राइंड करने के लिए क्या यूज होगा? ओखली यूज होगी या फिर चक्की यूज होगी। दीज थिंग्स हैव आल्सो बीन फाउंड। राइट डाउन mortars and pestles. Next main point, mortars and pestles along with grinding stones, along with grinding stones also sorry were also used for preparing flour, ठीक है? नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो, agriculture was quite sophisticated, stop the point. Tank irrigation and flood irrigation were both used. नॉर्थ इंडिया में तो नेचुरल फ्लडिंग होता है, वहां पे embankments were used for diverting the waters into the fields. Write down embankments, हाँ उसी में ही, embankments were constructed to divert water from rivers. Stop. Next point, next sub point. The megalithic people of South India also prepared the soil to ploughing. किस तरह के प्लाउज यूज होते थे? Both wood as well as metal plows, iron plows were also used. Write down both wood and iron were used for this purpose. Next point, next sub point. रिवर वैलीज में भी यूज होगा, और जहाँ पे डेक्कन लावा सॉइल है ना, वहां पे भी यूज हो सकता है। राइट, नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो, द मेगालिथिक पीपल
were also familiar with the technique of crop rotation and intercropping. Full stop. Sub point. Next sub point. Animal manure was used as fertilizer. Next sub point. Apart from food crops, some non-food crops were also cultivated, such as, बताओ, such as cotton and sugarcane. For this, the black cotton soil was especially useful. Next point. With the growth of foreign trade, किस तरह का एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ? Plantation agriculture became prominent, with large plantations of किस तरह के plantations लगाए गए? कोकोनट और ब्लैक पेपर और बताओ, इलायची, कार्डमम एंड सिनेमन. कॉफी तो बाद में आया, मेडिवल पीरियड के बाद, वो पोर्चुगीज लेकर के आए थे. सिनेमन एटसेट्रा. These had to be managed in a scientific manner. Full stop. Next main point लिखो. The megalithic agricultural practices reflect careful planning. The point. One evidence of this was the deliberate placement of burial sites outside the fertile zone. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिख सकते हो. The fertility cult also appears to be very important for the megalithic people, indicated by
the placement of some graves or some burials in the fertile zone probably for the purpose of divine intervention to the goodwill of ancestors. To the goodwill of ancestors. To the goodwill of ancestors. Divine intervention to the goodwill of ancestors. ठीक है? So this is what we may say about agriculture during the Megalithic age. अब आगे डिस्कस करना है क्राफ्ट प्रोडक्शन, सॉरी सबसिस्टेंस पैटर्न में ही एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग एटसेट्रा, ये सब कल डिस्कस करते हैं. अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मेगालिथिक लाइफ आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो. सिग्निफिकेंस भी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? एनी डाउट्स? आज जो क्लास में पढ़ाया है समझ में आया है? दिमाग में पिक्चर बन रहा है पैटर्न ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द मेगालिथिक एज का? किस तरह का लाइफ रहा होगा, किस तरह का कम्युनिटी रहा होगा, क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रहे होंगे, राइट? चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी असिस्टेंस आई कैन प्रोवाइड यू? मैप पॉइंटिंग विद दिस, ठीक है? तो मैप पॉइंटिंग भी इसके साथ ही करवा लेंगे. वंस वी आर डन विद दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक, तो उसके साथ साथ उसके बाद मैप भी मिल जाएगा. ऑलराइट. इंडो रोमन ट्रेड हमने पोस्ट मॉडर्न में नहीं कवर किया है. हाँ, तो पोस्ट मॉडर्न में ही, और पोस्ट मॉडर्न और संगम पीरियड कंटेम्परेनियस है ना, तो वहां पे कवर हो चुका है हमको. मेगालिथिक से क्योंकि डायरेक्ट एसोसिएशन था नहीं, तो और मेगालिथिक के टुवर्ड्स द एंड पोर्शन, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में तो शुरू हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी में मॉनसून विंड्स डिस्कवर हुए, तब तो एक्चुअल कांटेक्ट बनता है रोम और इंडिया के बीच में, राइट? तो बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेगालिथिक फेज वाज ऑलमोस्ट गोइंग अवे. ठीक है? तो कोई मतलब डायरेक्ट लिंकेज नहीं बनता है उससे. एवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म अलग अलग वैरायटीज का होता है. कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? टू यूज एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. अब देखो, जो अर्ली वैरायटी ऑफ कैपिटलिज्म है दैट इज नोन एज मर्चेंट कैपिटलिज्म और मर्केंटाइल कैपिटल. ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है कि एक जगह से कुछ ट्रेडर्स गुड्स को परचेज करते हैं और दूसरी जगह पर फॉर प्रॉफिट्स बेच देते हैं. दे मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. फॉर एग्जांपल, वो जो क्राफ्ट्समैन है, हो सकता है उनको एनकरेज करें बाय गिविंग देम लोन्स और एडवांसेस, या फिर स्किल ट्रांसफर करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनकी मदद करें, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्वॉल्व हो, और मे बी अगर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है तो लेबर को इकट्ठा करने में इन्वॉल्व हो. दे मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ दिस. ठीक है? दूसरा फेज ऑफ कैपिटलिज्म होता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना जरूरी होता है. और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? दैट जो प्रोडक्शन है एज वेल एज ट्रेड है, दोनों एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है. ठीक है? अच्छा, तीसरा क्या है? फाइनेंस कैपिटलिज्म. नाउ those people who have accumulated wealth, they find it less and less useful to invest more and more money into particular industrial concern. तो अब वो पूरे के पूरे मार्केट में पैसा लगाने लगेंगे, और फंक्शन किसके थ्रू करेंगे? बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट आर्म्स के थ्रू. तो यहाँ पे इनके थ्रू पैसा लगाएंगे अलग अलग जगहों पर.
they are going to start exporting industrialization and industrial capacity to different regions. तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ये मॉडर्न पीरियड में. उससे पहले तो एंशियंट पीरियड में कैपिटलिज्म अगर एग्जिस्ट होता है, अब देखो कैपिटलिज्म एज अ वर्ड ना मॉडर्न है, ठीक है, तो एंशियंट या मेडिवल पीरियड में एक्चुअली ये लग नहीं सकता है. मेडिवल पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में इनफैक्ट मेडिवल और मॉडर्न के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रेनेसा पीरियड में एक कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ. तो कमर्शियलाइजेशन टुक प्लेस. कमर्शियलाइजेशन किस चीज का? प्रोडक्शन प्रोसेस का. कमर्शियलाइजेशन किस चीज का? ट्रेड नेटवर्क्स का. ठीक है, तो कई सारे मर्चेंट गिल्ड्स, ट्रेड गिल्ड्स और क्राफ्ट गिल्ड्स इमर्ज होते हैं और ये लोग एनकरेज करते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज को बाय वेरियस मीन्स, एंड दिस प्रिपेयर्स द बेसिस फॉर द लेवल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस एट अ ग्लोबल लेवल. ठीक है, तो पहले रीजनल ट्रेड को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे. जब पैसा आ जाएगा, दे आर गोइंग टू अंडरटेक ओवरसीज वॉयजेस, में कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे. राइट, दैट इज हाउ इट इज. प्रिमिटिव कैपिटलिज्म मतलब प्रिमिटिव कैपिटलिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में? इनिशियली क्या चीज, कैसे कैपिटलिज्म कैसे इवॉल्व होता है भाई? धीरे धीरे जब एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो कैपिटलिस्ट इमर्ज होगा. कैपिटलिस्ट का काम क्या होगा? वो अपने वेल्थ को इन्वेस्ट करके उससे और प्रॉफिट डिराइव करे. सो दैट इज जो एक्युमुलेशन है और रिसोर्स क्रिएशन है, दे आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ साथ चले. मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि कैपिटलिज्म जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसके पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी था या फिर मिडीवल सोसाइटी था, वहां पे कैपिटलिज्म नहीं होता था. वहां पे या तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता था या फिर लॉर्ड एंड सर्फ रिलेशनशिप होता था. कैपिटलिज्म इज समथिंग व्हिच हैज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, इंडस्ट्रियल एज का आउटकम, राइट, एंड देयरफॉर कैपिटलिस्ट भी एक मॉडर्न क्लास है. तो एंशिएंट या मिडीवल पीरियड में wealthy individuals were there, that is not being denied, but the importance of capital for generating more wealth, for further widening the gap between the haves and the have-nots, this is a peculiar feature of the modern age.